Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 11 of aldehydes, ketones, and carboxylic acids. So, till now, basically, we had completed aldehydes and ketones, starting from the nomenclature of aldehydes and ketones, then their physical properties, then their preparation, and in the last, we have completed off with the chemical reactions involving aldehydes and ketones. So, talking about the gist of the chemical reactions, we have divided it into several categories, and they were as follows: the nucleophilic addition reaction, the reduction reaction, the oxidation reaction, the reactions due to alpha hydrogen. So, in this alpha hydrogen reaction, there were aldol condensation and the cross aldol condensation. Then we had Cannizzaro reaction for those compounds, or we can say for those aldehydes which do not have any alpha hydrogen. And in the last was the electrophilic substitution reactions. So, so for the purpose of revision, I will first start today's lecture with a question that involves aldol condensation and Cannizzaro reaction, so that it would be revised, and then we will move on to the carboxylic acids. So the question says that there will be a list of compounds given to you, and you have to tell that which of those compounds will undergo aldol condensation, which will undergo Cannizzaro reaction, and which will not undergo any of these. Okay, so I will provide you with a list of compounds. So first, let me write down the compounds, or I'll do one thing. I'll write down the compounds one by one, and then I'll discuss whether they'll undergo which kind of a reaction. So basically, you need to tell that if it will give the aldol condensation product or Cannizzaro or neither of these. Okay. And I'll also keep on writing down the reaction side by side so that you will get the summary of whatever we had done in the previous lecture. So coming to the first compound. The first compound is methanol. Methanol is HCHO. Okay. Methanol matlab one methane is for one carbon and al is for the aldehyde. So the aldehyde containing one carbon atom, that is HCHO. Okay, so what we will do is we will first draw the structure. Okay. So as you can see, we only have one carbon atom, and that is the carbonyl carbon atom. Okay, ye wala. We do not have a alpha carbon, and so that is why we do not have any of the alpha hydrogen also. Okay. So that means the compounds which do not have any alpha hydrogen, they undergo the Cannizzaro reactions. ठीक है, and that is an aldehyde. ठीक है, तो Cannizzaro reaction जो होता है वो सिर्फ aldehyde शो करते हैं, और जो aldol condensation होता है वो aldehydes और ketones दोनों शो करते हैं. ठीक है, तो ये aldehyde है और इसमें कोई alpha hydrogen नहीं है. That means this will undergo Cannizzaro reaction. Just by looking at the structure, we can tell which kind of reaction would be possible. Fine. Cannizzaro reaction. And if we write down the reaction, then it would be 2 HCHO. And in the Cannizzaro reaction, what is the reagent? It is concentrated alkali, है ना? Aldol condensation में क्या होता है? Dilute alkali होता है, और Cannizzaro में concentrated alkali होता है. So that was the main difference. So what will be the product in the Cannizzaro reaction? The aldehyde. So one molecule of aldehyde, it gets oxidized to the salt of the carboxylic acid, and one molecule gets reduced to the alcohol. ठीक है, तो साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है. So both of these products will have the same number of carbon atoms as the reactant is having. ठीक है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसमें the number of molecules are just the number of carbon atoms are just double the number of carbon atoms in the reactant, but इसमें ऐसा केस नहीं है. So okay, what I'll do is I'll write down this thing in a red. First of all,
एल्डोल के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों में होता है। एंड थर्ड थिंग इज एल्डोल में यू हैव dilute alkali. And then for the condensation part, you have heat. ठीक है। Similarly, Pranizara mein, what are the key points that you should remember? These are the key points I am listing down that would make your this exercise easier. ठीक है। Similarly, no alpha hydrogen, only aldehydes. क्योंकि कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। कीटोन्स इवन इफ you are providing the extreme oxidizing conditions, then also the ketones they'll have to have a carbon carbon cleavage. कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज ही होगा, उसके बाद ही you will be able to get the carboxylic acid salt. Otherwise, so that is why we don't count ketones over here. And the third difference, concentrated alkali is the reagent. ठीक है, so these are the key points that basically distinguish aldol condensation reactions from the Cannizzaro reactions. तो आप ये ध्यान रखिए, these always you should remember. ठीक है। Now I will move on to the next question. Next compound. ठीक है, तो methanol था, so it undergoes a Cannizzaro reaction. Now second compound is 3-methyl pentanol. ठीक है, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ओनली आफ्टर सीइंग द स्ट्रक्चर वी कैन टेल दैट विच काइंड ऑफ रिएक्शन विल हैपन, और फिर उसके बाद वो वाला रिएक्शन लिखेंगे। तो 3-methyl pentanol means basically we are having 5 carbon atoms and then the aldehyde is there and on the third carbon atom we have a methyl group. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर वुड बी 5 कार्बन एटम्स, पेंटेनल मतलब एल्डिहाइड है, और थर्ड वाले पे मिथाइल लगा हुआ है, सो देयर विल बी CH3. So here will be only one CH, okay? So I'm erasing it. Okay, so this is 3-methyl pentanol. Now you can see this is the alpha carbon. This one is the alpha carbon, and you are having 2 hydrogens on alpha carbon. So till now we had basically covered everything about the aldehydes and ketones. We started off with the IUPAC and a common name system nomenclature of aldehydes and ketones, and then covered the properties and the preparation of aldehydes and ketones using all of the methods. After that, we were discussing the chemical reactions of aldehydes and ketones. So in those reactions, just summarizing those reactions, they were the nucleophilic addition reaction, then the oxidation reaction, the reduction reaction, then the reactions due to alpha hydrogen, which basically involved the aldol condensation and the cross aldol condensation reaction. And then we had Cannizzaro reaction for the compounds which do not have any of the alpha hydrogen. And lastly, we have electrophilic substitution for the ring, for the aromatic rings. So first, today I will start the lecture with a question which will basically revise, which is for the revision purpose of those aldol condensation and Cannizzaro reactions. The question says that I'll provide you with a list of compounds, a list of, they can be aldehydes, ketones, or whatever. That will be a list of compounds, and you need to tell that which of the compound will undergo the aldol condensation, which one will undergo Cannizzaro, or neither of the reactions. Okay, so I will first write down one compound one by one, and also I will write down the reactions side by side, so that will be revision. Okay, so you have to tell whether it's aldol condensation or Cannizzaro or neither of these. Achha, before just jumping to the question, I would first like to mention some key points, or you can say some key differences that we discussed in the last lecture, that the key differences between the aldol condensation and the Cannizzaro reactions. Okay, so these key points you should always remember, that will make the questions easier. Okay, so I will just mention them in the corner. Aldol condensation. Okay, so the first important point is at least 1 alpha hydrogen. Second important point is aldehydes and ketones both can undergo aldol condensation reactions,
And the third point is basically we use dilute alkali. And then in the second step, for the condensation, we use this heat. Similarly, for the case of Cannizzaro, the key points are no alpha hydrogen. These reactions are only shown by aldehydes. And here you use concentrated alkali. Okay? And also you must remember that in aldol condensation, when two molecules of aldehyde or a ketone, they are reacting with one another. So the final compound, the final product that is forming, that has a number of, that has more carbon atoms as compared to the reactant. So it's double the number of carbon atoms as the reactant. But in Cannizzaro, because the combining of two molecules is not happening. Okay, so what is happening in Cannizzaro? One molecule is getting, the one aldehyde molecule is getting reduced to the alcohol, and the other aldehyde molecule is getting oxidized to the salt of the carboxylic acid. ठीक है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, बट दोनों कंबाइन नहीं हो रहे हैं. That means the final products, two kinds of products are being formed, and both of them, they have the same number of carbon atoms as were there in the reactant. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से भी आप प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होके वो प्रोडक्ट बना है. ठीक है, so these were the key differences or the key points that you should always remember while you are dealing the questions in Cannizzaro and aldol condensation. Now we will move on directly to the questions. So the first compound is methanol. Methanol is HCHO. Okay, so as you can clearly see that we only have one carbon atom, and that is the carbonyl carbons. Okay, so we do not have any alpha carbon, so we do not have any of the alpha hydrogen as well. Okay, so when there are no alpha hydrogen, and it is an aldehyde compound, and the reactant is aldehyde, then we will have Cannizzaro reaction. So I will also write down the reaction for you, and as written, we have concentrated NaOH. So the one molecule, as I told, will get reduced to the alcohol with the same number of carbon atom, and the other one will get oxidized to the salt of carboxylic acid. जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, so this is Cannizzaro reaction. Second compound given to you is 3-methyl pentanol. Pentanol means you have 5 carbon atoms in that aldehyde. Okay, so first we will draw the structure. This say you'll be able to tell which kind of reaction will happen. 5 carbon atoms over here, or third carbon पे you have methyl group. Okay, this CH2 will not be there. This will be simply, so as you can see that the alpha carbon has 2 alpha hydrogen atoms. इसका मतलब Cannizzaro तो नहीं होगा. ठीक है, because it is having alpha hydrogen, so there will be aldol condensation reaction. So here two molecules of this compound, you will have dilute NaOH in the first step, and in the second step you will have heat. This triangle symbol means heat with minus water. Minus water मतलब water remove हो रहा है, condensation हो रहा है. ठीक है, तो अच्छा, this Roman symbols I have written for 1 and 2. This simply means कि in the first step you will add dilute NaOH. After the compound, some new compound has formed, you will have the second step. ठीक है, in the मतलब एक compound, एक product बनने के बाद आप heat कर रहे हो, आप साथ साथ heat नहीं कर रहे हो. You are not heating this compound while you are adding dilute NaOH. ठीक है, ये दोनों अलग अलग steps हैं. जब हम Romans में लिखते हैं, that simply means this. ठीक है, so I will directly write down the final compound. So I am using the same trick that we discussed during the lecture. ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है. ठीक है, तो उस डबल बॉन्ड O की जगह पे आपको सिंपली अल्फा कार्बन को लगा देना है, एंड देन जब अल्फा कार्बन आप यहाँ पे लगाओगे तो दैट विल बी CHO, एंड दिस अल्फा कार्बन हैज, आई मीन दिस इज द अल्फा कार्बन ओवर हियर. आपने उसको यहाँ पे अटैच कर दिया है, एंड देन दिस अल्फा कार्बन से क्या अटैच्ड है, 3 और कार्बन अटैच्ड है ना. तो ये हमारा अल्फा कार्बन है. इससे यू हैव CH, CH3, और
यहाँ पे you are having this. So this is the final compound. Now coming to next compound, we have benzaldehyde. तो benzaldehyde is simple. You have a CHO group in on the benzene ring. ठीक है, तो यहाँ पे भी बिकॉज यू आर हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यू कैन सिंपली सी कि ये वाला अल्फा कार्बन है और इसके नीचे वाला इज द sorry, this is the carbonyl carbon and इसके नीचे वाला is the alpha carbon. So this alpha carbon already is full of 4 bonds and you don't have any of the alpha hydrogen. So you will have a Cannizzaro reaction over here, concentrated alkene. ठीक है, इसमें क्या होगा, one molecule will form the alcohol. So this is the benzyl alcohol and the other will form the acid. Not acid exactly, but the salt of acid. So the fourth compound given is benzophenone. ठीक है, तो benzophenone का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू हैव अ रिंग ओवर हियर और फेनोन मतलब एक और फेनाइल रिंग है. ठीक है, तो एज यू कैन सी कि ये हमारा अल्फा सॉरी दिस इज द कार्बोनिल कार्बन एंड इट हैज 2 अल्फा कार्बन एंड दोनों ही अल्फा कार्बन में you do not have any alpha hydrogen. ठीक है, that means because all the 4 bonds they are occupied. ठीक है, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं होगा. ठीक है, अगर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स कि Cannizzaro इज स्टिल पॉसिबल, क्योंकि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वहां Cannizzaro रिएक्शन होता है. बट Cannizzaro इन द केस ऑफ Cannizzaro ओनली एल्डिहाइड्स अंडरगो द Cannizzaro रिएक्शन और कीटोन नहीं अंडरगो करते. And this is a ketone. That means a ketone, if you have a ketone with no alpha hydrogen, neither of these reactions will, neither aldol condensation nor Cannizzaro. Coming to the next compound, we have fifth one is cyclohexanone. ठीक है, तो cyclohexanone is, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, हेक्सानोन है मतलब साइक्लिक हेक्सेन है. cyclohexene is like this और उसी में कीटोन है, दैट मीन्स दिस इज द कंपाउंड. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, दीज 2 आर द अल्फा कार्बन, ये वाला और ये वाला अल्फा कार्बन है. ठीक है, एंड इन दीज 2 अल्फा कार्बन यू आर हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, दैट मीन्स कि अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड एल्डोल कंडेंसेशन विल. द फर्स्ट स्टेप इज dilute NaOH एंड द सेकंड स्टेप इज हीट. ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. बट आपको क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि आप पहले वाला मॉलिक्यूल को एज इट इज ड्रॉ करो, बस उसमें से डबल बॉन्ड O हटा देना है. मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, यू सिंपली हैव टू रिमूव O, ऑक्सीजन. तो आपने क्या किया, वैसे लिख दिया, यू हैव रिमूव द O. फिर आप इस बॉन्ड से यू हैव टू अटैच द अल्फा कार्बन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अल्फा कार्बन एज आई टोल्ड यू कि ये वाला कार्बन जो मैंने टिक किया हुआ है, ये वाला दीज 2 आर अल्फा कार्बन, यू कैन अटैच एनी वन ऑफ देम. सो व्हेन यू अटैच दिस, सो बेसिकली यू आर अटैचिंग द रिंग ऑल टुगेदर. ठीक है, क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो जब आपने रिंग अटैच कर दी और दिस इज द अल्फा कार्बन, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा on the second molecule. ठीक है, so this is the structure for the case of cyclohexanone aldol condensation. Whenever I am writing dilute, that simply means it is aldol, and whenever I am writing concentrated, that means it is Cannizzaro. Then we have the sixth compound. Sixth compound is given 1-phenyl propanone. मतलब it is a ketone. You have phenyl on one side and 2 other carbons on the other side. ठीक है, so first I will write down the structure. I will write down the structure in a simplest form. So I am writing benzene ring as PH, मतलब phenyl. This is the compound 1-phenyl propanone. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि this is the alpha carbon and you have 2 alpha hydrogens. That simply means कि aldol condensation reaction will take place of heat. ठीक है, for the purpose of condensation. Now the final product will be, ठीक है, and you have to attach the alpha carbon over here. This is the final product. Now next compound is phenyl acetaldehyde. ठीक है, so the structure would be of phenyl acetaldehyde. The structure would be phenyl and acetaldehyde मतलब 2 carbon atom. ठीक है, so here also as it is simply clearly visible that you have 2 alpha hydrogen, तो यहाँ पे भी
aldol condensation possible. ठीक है, यहाँ पे भी आपको कैसे बनाना है, CH double bond यहाँ पे है, you have removed the oxygen and on the place of oxygen you have simply attached the carbonyl carbon, the alpha carbon of the other molecule. So this is the alpha carbon and इससे pH is attached. ठीक है, simple. Now we have butane 1-ol. Butane 1-ol. इसका मतलब you have 4 carbon atoms over here and first position पे OH group लगा हुआ है. तो as it is an alcohol, और alcohol जो होते हैं वो aldol condensation भी नहीं देते और Cannizzaro भी नहीं देते हैं. ठीक है, so because it is an alcohol, so it will neither undergo an aldol condensation nor Cannizzaro. Then we are coming to the last compound provided to us and that is 2,2 dimethyl butanol. ठीक है, so I am directly drawing the structure 2,2 dimethyl butanol. ठीक है, so butanol means first of all you have 4 carbon atoms and butanol मतलब aldehyde है और फिर second carbon atom पे you have 2,2 dimethyl मतलब दोनों तरफ methyl group लगा हुआ है. ठीक है, so you can clearly see over here कि जो हमारा alpha carbon है उस that is attached to 4 other carbon atoms. ठीक है, that means there is not a single alpha hydrogen over here. ठीक है, तो जब alpha hydrogen नहीं है that means and the product and the compound is an aldehyde. ठीक है, तो कीटोन होता तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता. ठीक है, but it is an aldehyde with no alpha hydrogen, that means Cannizzaro reaction होगा and you will need concentrated NaOH. प्रोडक्ट्स में हमें कुछ नहीं करना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड क्यों ना हो, हमें क्या करना है, जो CHO वाला ग्रुप है वहां पे एक जगह पे हमें अल्कोहल बना देना है और दूसरी जगह पे एसिड. ठीक है, जो बाकी का कंपाउंड है, द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विल रिमेन अनऑल्टर्ड, इट विल रिमेन एज इट इज. दिस इज द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, so this was all for the case of revision. मतलब I have written down the reactions also so that you could be able to understand कि what we did in the last lecture. We started off with the carboxylic acids and we discussed some of the rules of the nomenclature of the carboxylic acids. ठीक है, so I will just discuss those rules quickly and then we will move on to the examples of IUPAC and the simple common name nomenclature. So as we discussed, the common names of these kinds of carboxylic acids, they are generally derived from the Latin or the Greek names of their natural sources. ठीक है, तो जो भी natural source होता है हम उसका Latin या फिर Greek name ले लेते हैं and we simply add IC acid, मतलब एक acid to those names. ठीक है, तो obviously you'll not be able to learn all the names of all the common names of the carboxylic acids क्योंकि हर एक टाइप का एसिड जो है you get it from some other new source. ठीक है, so इसमें we will in the terms of common names we will only discuss several important and the basic carboxylic acid structures. ठीक है, तो उन जिनके common names generally exams में भी आ सकते हैं, मतलब like they will not directly ask you कि write down the common name but they can ask you in some form of question. ठीक है, कि ये चीज इससे react कर रहा है, so you must be aware of those names. They are basic, बहुत difficult नहीं है. Then in the case of IUPAC system, so for the aliphatic carboxylic acids, we simply have to replace the E of the alkane. ठीक है, aliphatic acids में हमें क्या करना है, जो भी alkane होगा उसमें से E हटा के we have to replace it with oic acid, OIC acid. ठीक है, if multiple groups if multiple COH groups are present, we can use dicarboxylic acid or tricarboxylic acid. ये ऐसे clear नहीं होगा, अभी when we'll do the examples it will be. So these were the simple rules. They are not as complex as in the case of aldehydes and ketones. So we will directly jump on to the examples. Nomenclature of carboxylic acid. ठीक है, तो what I will do is I will first write down the structure, then the common name and the IUPAC name. So you'll be able to tell the difference between the common name and the IUPAC name. बहुत ज़्यादा difficult नहीं है. We will only be discussing the some of the important and the basic common names. ठीक है, तो starting with the simplest
acid, that is HCOH, comprising of only one carbon atom. So because it is found in the red ants, or red ants का Latin version, you call them in FORM form. ठीक है, तो वहां से नाम आया है, that is formic acid. So whatever names, common names we are discussing, you should be aware of those names. ठीक है, वो बहुत ज्यादा difficult नहीं है, complex इस वजह से. And because it is having one carbon atom, और one carbon atom वाला alkane कौन सा होता है? मीथेन. ठीक है, तो वहीं से नाम आएगा मीथेन. सो हमने क्या डिस्कस किया कि आप एल्केन लिखो, ठीक है, और जो उसमें ई आता है, ई हटा के आपको क्या लिखना है? ओइक एसिड. तो ई हटा के आई हैव रिटन ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज विथ 2 कार्बन एटम्स. सो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड. व्हाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन वेनेगर. ठीक है, वेनेगर में हम उसको ग्रीक नेम से ACET से डिनोट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसिटिक एसिड. और बिकॉज इसका जो करेस्पॉन्डिंग एल्केन है वो क्या है? इथेन. तो जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? इथेनोइक एसिड. इथेन से इथेनोइक एसिड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 कार्बन एटम्स, द कॉमन नेम इज प्रोपियोनिक एसिड. एंड द करेस्पॉन्डिंग एल्केन इज प्रोपेन. है ना, 3 कार्बन एटम्स वाले एल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन. तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है. The common name and the IUPAC name, they look similar, but they both have different spellings. ठीक है, दोनों का spelling different है, so you must pay attention over here. Then you have 4 carbon atoms because it is found in rancid butter, so that is why जो common name है that is butyric acid. ठीक है, और IUPAC is simplest, that is ब्यूटेन से आएगा ब्यूटेनोइक एसिड. देन यू हैव अ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन ओवर हियर, क्योंकि जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं, तो एज दिस इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन. ठीक है, तो इस वजह से हम आइसोमर ऑफ ब्यूटेन को भी कॉल इट एज आइसोब्यूटेन. सो कॉमन नेम वहीं से आएगा, दैट इज आइसोब्यूटायरिक एसिड. और इन द केस ऑफ IUPAC we will write it as 2-methyl propanoic acid. After this, we are coming on to the groups, to the compounds which are having multiple COH group. ठीक है, जैसे we discussed in the IUPAC system, if there are multiple COH group, we can use di or a tricarboxylic acid. ठीक है, तो because यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन एटम है and both of them are COH, तो इसका जो कॉमन नेम है that is oxalic acid. Obviously there is this common name is not following any of the rules, ये सोर्स से आया हुआ है. But the IUPAC system, क्योंकि there are 2 carbon atoms and the corresponding alkane is ethane. ठीक है, so that is why this will be known as ethane dioic acid. So coming to the next compound, जिसमें multiple COH group है and you have 3 carbon atoms. Similarly हम इसको बोलते हैं malonic acid, and क्योंकि यहाँ पे 3 carbon atoms है, so we will have propane and 2 acidic compound है, so dioic acid. Here we are having 4 carbon atoms. The common name is succinic acid, SUCCINIC. And because there are 4 carbon atoms, so we will have butane dioic acid. Now we have this, and you have COH attached to all of these 3 carbon atoms. ठीक है, जैसे 8th वाले क्वेश्चन में था 2 कार्बन एटम थे, so that was butane dioic acid. Similarly, if it would have been 3 carbon atoms, that would be pentane dioic acid. If there would be 4 carbon atoms, that would be hexane dioic acid. ठीक है, तो वो चीज एक्सटेंसिबल है, आप कितने भी कार्बन एटम्स ज्वाइन कर सकते हैं. हियर यू हैव 3 कार्बन एटम्स, तीनों पे ही COH ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, सो कॉमन नेम वी डोंट नीड टू डिस्कस बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स एसिड. बिकॉज यहाँ पे COH इज अटैच, देयर आर 3 COH. ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है इसका जो नेमिंग है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है. दिस एग्जाम्पल, आप COH के कार्बन एटम्स को काउंट नहीं करेंगे, यू विल सिंपली काउंट ओनली द कार्बन एटम्स विच आर हैविंग हाइड्रोजन्स, जो भी चेन के पार्ट हैं, एंड दैट विल बी प्रोपेन 1, 2, 3,
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नेमिंग जो है वो ऊपर वाले कंपाउंड से डिफरेंट है। उनमें आपने सिंपली डायोइक एसिड करके लिख दिया था, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड यू डोंट हैव टू काउंट द कार्बन एटम्स ऑफ COH ग्रुप। ठीक है, बाकी जितने हैं बस आप उनको काउंट करो, और जहां जहां पोजीशन पे COH लगा हुआ है वहां पे पोजीशन डाल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू some examples of acids which are a part of a aromatic ring. ठीक है, तो you have COOH attached on a benzene ring. ठीक है, तो इसका जो common name है that is benzoic acid, and the IUPAC name is also similar, benzene carboxylic acid. ठीक है, then another one is CH2COOH, this is the benzene ring. इसका जो common name है that is phenyl acetic acid, और जो IUPAC नेम है that is 2-phenyl ethanoic acid, क्योंकि अगर आप फिनाइल रिंग हटा दो दैट वुड बी CH2COH एंड दैट इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हम ऐसा कह रहे हैं, वी आर सिंपली कंसिडरिंग दिस CH2COH एज अ प्रिंसिपल चेन, जो हमारा इथेनोइक एसिड है, और उसमें सेकंड कार्बन पे हमारा फिनाइल रिंग लगा हुआ है, सो दैट इज व्हाई इट इज 2-phenyl ethanoic acid. देन यू हैव दिस मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज थैलिक एसिड। ठीक है, और ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल फाइंड दिस nomenclature, this thalic acid thing in many of the chapters which you will study ahead. ठीक है, so this is important, you should learn this. And the IUPAC name says benzene 1,2 position पे dicarboxylic acid. So these were the certain examples of the nomenclature of the carboxylic acids. They are not very complex. You can simply, when you will see them, you will be able to learn them. Just remember the IUPAC name. ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम्स बहुत ही कम जगह पे यूज होते हैं और बहुत जो बेसिक है, सो while reading only you will be able to learn them. Now coming to the structure of carboxyl group. ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, because you have this C double bond O and this OH, है ना। So if we are considering this carbonyl carboxyl carbon, then the bonds to this carboxyl carbon, they lie in one plane. ये जो 3 bond आप देख रहे हो, they lie in one plane and they have an angle of about 120 degree between them. Exactly 120 degree नहीं होता क्योंकि ये double bond O है। ठीक है, और it also depends upon the size जो भी दूसरे साइड पे लगा हुआ है, but वो approximately 120 degree ही होता है। The carboxylic carbon is less electrophilic than the carbonyl carbon. ठीक है, carboxylic carbon मतलब ये जो कार्बन है ये वाला, और carbonyl carbon is the carbon which is present in aldehydes and ketones. ठीक है, उस केस में क्या होता है, या तो H होगा और या तो R होगा, है ना, R प्राइम और R। ठीक है, तो this carbon is known as carbonyl carbon and this one is known as carboxyl carbon. ठीक है, तो this is less electrophilic than the carbonyl carbon. और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो O है इसमें दैट इज बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और इन टर्न क्या होता है, बिकॉज OH के पास में देयर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, O के पास में। ठीक है, तो दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर in the next structure. So these are the resonance structures and because of these resonance structures जो हमारा carboxylic carbon है वो less electrophilic होते हैं. So there is not much about the structure of carboxyl group, but you need to be aware of this electrophilic nature thing. That will be helpful while we are doing the chemical reactions. Now we will move on to the methods of preparation of carboxylic acids. The first and the easiest of the methods of preparation of carboxylic acid is from the primary alcohol and aldehyde.
मैं इसको easiest इसलिए बोल रही हूँ because we have already discussed these reactions but in a different form from primary alcohols and aldehyde. ठीक है, तो यहाँ पे हम preparation of carboxylic acid पढ़ रहे हैं. पहले जब हमने डिस्कस किया था that was in the form of reactions of primary alcohol and the reactions of aldehydes. ठीक है, जिसमें कि carboxylic acid बन रहा था. ठीक है, तो primary alcohols are readily oxidized to the carboxylic acids with the common strong oxidizing agents like potassium permanganate that is KMnO4. तो बेसिकली आपको पता होगा कि अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड बनाते हैं. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अल्कोहल वाले चैप्टर